Okay, let's start from here. Is the PPT visible, right? Yes, sir. Okay, guys. Oh, that's okay. And the recording is going on. Right. Okay. So what we are talking about, the light. So as I discussed earlier, that the image is just the pattern of light. So without light, there will be no image. So once you are capturing an image, there must be light. So here we'll discuss about that what is the attributes of light, or you can say the aspects of light. Okay, when we are doing lighting, which things that you have to you have to take care for those things once you are doing lighting for any scene. So there will be the artificial or there will be the natural light. So how to use those light within the scene, right? So here is 5 things is over here: quality, direction, color, intensity, and the texture, right? So we'll start it from the intensity of light here. Intensity means, the how bright your light is, right? Once you are using any lights, either it will be the artificial, the daylight, you have to decide that the how much amount of light should fall, right, on your character. Maybe suppose you are using, some lights that is falling from, that will be the sunlight. And you just wanted to set the exposure. So at that point of time, you feel that there's a more amount of light is falling. So at that point of time, once you're using camera, you try to reduce the intensity of light through which, because you are not supposed to able to, the diffuse the light or sunlight. So what you are using your exposure to control those light, right? So basically what you are doing over here, you just reduces the intensity of those light, right? कि आप light की intensity reduce कर रहे हैं. How? By your exposure compensation, through the exposure compensation. So basically, you are just deciding that how much intensity you need, right? And you just decided how much light that you need. So it means how much brightness that you need over here, right? So in any scene or any composition, the intensity is the important that you have to think about it. What should be the intensity of those light, right? It could not be too much bright, or there will be no less amount of light. So it means at anyhow texture must be there, right? कि ऐसा ना हो कि बहुत ओवर ब्राइट होने पे क्या होता है, will not get the texture of the screen, right? So you must have to decide that what should be the intensity. Suppose it's not the daylight, it's the artificial light, and suppose you are shooting on some aperture 2.8 or 1.4. So it maybe there will be the less amount of light that you needed, because already you're just compensating it through the your exposure compensation, right? So in any scene or any kind of setup, the first things that you have to decide is your intensity, right? So अगर आप कोई भी scene, कोई भी sequence shoot कर रहे हो, तो you know that how much amount of light that you are using within a scene. So you can decide it. It will be the 5 kilowatt or 4 kilowatt or 10 kilowatt or 8 kilowatt. You can decide the intensity of that light. कि मैं 2K की लाइट यूज करूंगा या 4K की लाइट करूंगा, डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन. बट बिफोर शूट you must have to decide the intensity, right? कि मैं कौन सी लाइट यूज करूंगा. Either that's another things, you can say I will diffuse it and whatever, but you just decided the which kind of light that we are using. So you know that what is your payload once you are using the light. So you must have to know the intensity of light, कि आप अपने सीन में कैसी लाइटिंग चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग we just decided it कि मुझे कौन सी लाइट रखनी है, किस टाइप की लाइट रखनी है, right? What should be the intensity of those lights? So you can decide it. So the first things that you must have to know that in terms of the light aspects of light में, the first things comes is intensity. सबसे पहले आप decide करते हैं कि भाई मुझे intensity कितनी वाली चाहिए. Then it comes to the quality of light. Here it is.
It means quality of light means just like the right now we have discussed about the intensity, right? So in intensity you can measure, right? Intensity आप measure कर सकते हो कि it is the 1K light or 2K light or 4K light. But for the quality, you can't measure it. It's just based upon your visual perception कि visually ये कैसा दिख रहा है. So ये visual perception पे based होता है. It's not, you can't measure it. Just like intensity you can measure is the घर में लगाते हो आप, right? कोई भी बल्ब यूज कर रहे हो. Suppose for an example, guys, right now अब तो वाले बल्ब नहीं आते हैं टंगस्टन वाले. Suppose you are using that the CFL जो हम लोग यूज करते हैं, the tube light that you are using, right? So you know the intensity of that light ना कि 40 watt वाला ट्यूब है या 20 watt वाला है. Sometimes आप छोटे एरिया में 15 watt वाला लगाते हो, 10 watt वाला लगाते हो, right? What it is just the intensity, right? ये intensity decide करता है कि intensity इसकी कितनी आप लगाना चाह रहे हो. It means how much bright you want, right? So you can measure the intensity, right? But whatever the light and the quality of light is coming through that, you can't measure it, you can just feel it. Suppose for an example, in terms of quality, I just describe in 2 words. In terms of quality is either your light could be hard or either it could be the soft. Quality is the only 2 things will be there. Either it will be the hard or it will be the soft. So don't get confused कि मैं इसको intensity से relate कर रहा हूँ. मैं उसको separate कर दूंगा. Hard means hard shadows, right? Soft means soft shadows, right? It means the texture. Suppose for an example, you guys have used the candle light, right? Candle use किया होगा. Okay. Yes. So just think about it. Candle have the more intensity or the 40 watt bulb have the more intensity? I'm talking about the 1 foot one candle. Candle have the more intensity or the whatever the CFL that you're using, 20 watt or 40 watt? That the 40 watt bulb have the more intensity, right? Right. But when it comes to the shadows, which light will create more shadows? Obviously candle, if you guys have used it, right? Candle will produce more shadows. Here you got the answer. It didn't mean that the higher the intensity will produce, greater the shadows. ऐसा कुछ नहीं है कि intensity ज्यादा होने से shadows ज्यादा होंगे. Quality and intensity is different, right? यहाँ पर क्या है, कैंडल की क्वालिटी हार्ड है, इंटेंसिटी कम है, राइट? इंटेंसिटी कम है, क्वालिटी यहाँ पर लाइट की हार्ड है. सो हार्ड क्यों है? व्हाई इट्स कॉल्ड द हार्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी? बिकॉज create hard shadows, right? It casts hard shadows. The another side, it will create a hard shadow. So that's the reason in terms of quality, you can say that the quality of this light is harder. The another things that you can recognize any lights, is it hard or soft, right? So the things is that simple sa hai ye, smaller the source, harder the shadows. It means अगर source आपका जितना छोटा है, quality of light will be harder. जितना छोटा source, light की quality उतनी hard होगी. Suppose for an example, right now we have discussed about what? We have discussed about candle. What is the source of candle? It's very smaller, right? बहुत छोटा होता है source. So that's the reason. Have you seen the torch light? Torch वाली light देखिए कितनी sharp होती है, right? Have you seen the tube lights? Tube light की light कैसी होती है? Is it soft? Right? Right now, you guys are using those lights. अभी भी आपके room में होगा. Just check it out. It's very soft image that it will produce. Right? But for the candle, it become harder. So क्या है, candle का source छोटा है. Just for example, have you seen shadows in direct sunlight? Right? Direct sunlight में shadows देखा होगा ना? If the some sunlight is directly falling through the through your windows at your home, see how much shadows will be there. See how much pattern will be there. वो pattern कितना sharp होगा. Windows पे जो भी pattern बने होते हैं inside your house, right? Look how much sharp the shadows is. Once just fix the curtains on it, right? एक curtain डाल के देखो. Some curtains जो पतले वाले curtains आते हैं, right? जब curtains डालते हो, do you think that that sharpness of the shadows is remain same? The sharpness of the shadows is remain same? No. The reason is now your source have been changed, right?
Your source have been changed. Now that curtains become your source. उसने क्या क्या रिफ्यूज कर दिया, right? Just like another example I'll give you. इससे ज्यादा relate करोगे आप लोग. डायरेक्ट सनलाइट में क्या होता है, बहुत ज्यादा शैडोज आपको दिखाई देता है, राइट? जस्ट थिंक अबाउट द लूमी क्लाउड ना, बहुत ज्यादा क्लाउड है, लूमी क्लाउड है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डू यू फील शैडोज? देयर इज अ लेस शैडोज ना, और नॉमिनल शैडोज बहुत विजिबल होता है, राइट? होता है, लेस शैडोज होते हैं ना. रीजन क्या है? सनलाइट ही तो आ रहा है, ऐसा नहीं सन चला गया, सन तो है. बट द थिंग्स इज दैट नाउ दैट क्लाउड्स बिकम the source, right? Now that clouds become the source, now source become bigger. So bigger the source, softer the light. जितना बड़ा सोर्स बनते जाएगा आपकी लाइट सॉफ्ट होती जाएगी. So here your answer, smaller the source, harder the shadows in terms of quality, and bigger the source, softer the light. It means softer the quality, right? So sorry. So do you get the difference between intensity and the quality, guys? Any confusion? No, sir. Is it clear that the intensity is just the, you know, the brightness, right? फिर इसको और मैं relate Sir, करता I हूँ. have a question, sir. Yeah. Sir, when you were explaining the intensity of light, there are two things. Like, अगर हम सेट पे पहले इंटेंसिटी अपने कैमरा से सेट करते हैं या फिर हम पहले लाइटिंग को सेट करते हैं. लाइक अगर मेरे पास अवेलेबल लाइट Look, जो है. before shooting, you have to decide, right, what you want, right? You know, see, you want, suppose if you want to shoot the portrait, right? At that point of time, what you want the shallow depth of field, right? So firstly, you decide, na, I have to shoot shallow depth of field, so we must have to shoot 2.8, right? Yes, sir. For the light, according to the light, you will not change your exposure. You have to decide your exposure first. I have to shoot on this one, right? And after that, you're just manipulating it with the lights. You can diffuse the light, you can, you know, the whatever, you can change the intensity of light, whatever available over there. But firstly, you just decide. Suppose we have to shoot on higher frame rate. Suppose you have to shoot on 100 frames. It must be you have to use your shutter speed must be double of it, जो by default होता है. So it means you have to use a 200 shutter. उसको तो compensate नहीं कर सकते ना. You can't use higher ISO, right? Every camera have the native ISO. It's called the base ISO. Once where the camera is started their ISO. Some camera have 100, some camera have 400, right? So the बहुत ज्यादा उससे आगे भी नहीं जा सकते हैं आप. So there will be the grains, and you just decided apertures, right? So firstly, you have to decide which kind of settings that you're gonna use, right? कि आप किस टाइप की सेटिंग्स आप यूज करने जा रहे हैं. Firstly, you decide, and according to that, आपको वहां पर अगर मुझे हाई फ्रेम रेट शूट करना है, सपोज कर 200 फ्रेम 300 फ्रेम, so I know the which kind of intensity I need, because suppose if I have to shoot on 200 fps, it means shutter must be 1/400, right? So 1/400 shutter में क्या होगा, there will be less amount of light, so we need higher intensity of light. हमें छोटी लाइट से काम नहीं चलेगा, बिकॉज 1/400 में शटर ऑलरेडी यूज कर रहा हूं. तो we need some higher intensity of light. Okay, sir. Thank you. You got it? Yes, sir. So I have one more question to it. Yeah, sure. So talking about the intensity of light, usually if you go for HMIs or even like a smaller light, they're measured in wattage. But Yeah. that's just the power consumed by the light. But the original brightness and the intensity depends upon the lumens now. So, Yeah. So why is like lumens not used as a unit and wattage is used? Because lumens is for your light meter, na? Basically, it's for the light meter that they use a watt, because it's related to the powers, right? So like electric supply, it's related to that. That's the reason वहां पर हम watt use करते हैं. When it's come from the, you know, for the light meter, at that point time हम इसे luminance में use करते हैं और foot candle में measure करते हैं. Because you know that there will be the fall off, no? Look, fall off, if you guys will understand, because I will discuss in another class, but fall off में बता देता हूँ. Whatever light is falling, right? When you just switch on the light, right? There is a certain range of that light, right? Suppose you switch on a light from the 8 feet or 6 feet.
Do you think the intensity of that light will remain same from 6 feet? No. No, it will keep changing, right? In the certain distance, from 1 to 2 feet, 2 to 3 feet, 3 to 4 feet, 4 to 6 feet. So जितना ज्यादा distance बढ़ते जाता है, क्या होता है? Fall off will remain same. Just like the sunlight. See, the sunlight के fall off में change होता है क्या? Suppose you are using, you are living at the ground floor, someone is the 8th floor. Do you think the intensity or of the light is keep changing? होता है? नहीं ना? Brightness range remains same. Yeah. Right? But for the light, क्या होता है? तुम अपने रूम में या if you guys have used any kind of 1000 watt bulb या कोई भी बल्ब अगर यूज किया, क्या होता है? उससे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, just it keep changing there, right? Yeah. उसकी ब्राइटनेस चेंज होती जाती है. सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल ना, आई एम शोइंग यू राइट नाउ, मैं एक टेबल लैंप यूज कर रहा हूँ और मैं से पीछे होते जाऊंगा. नाउ सी हाउ मच इंटेंसिटी इज गोइंग चेंज, राइट? हो रहा है. सिर्फ हाफ एन इंच और हाफ इंच विड्थ पे इंटेंसिटी चेंज हुई, Yes. राइट? सो बिकॉज ये स्लाइड का फॉल ऑफ कम है, राइट? सो द थिंग्स इज दैट उसमें हम क्या होता है कि लाइट के लुमिनेंस के अकॉर्डिंग हम फ्रॉम द लाइट मीटर वी चेक इट आउट. बट वहां पर क्या इलेक्ट्रिक में क्या है, किलो वॉट में हम मेजर करते हैं. सो दैट्स द रीजन लाइट वहां पर किलो वॉट में आता है, राइट? Yes, sir. Got it. Okay, so is there any confusion in terms of quality, guys? अभी क्वालिटी का कुछ एग्जांपल लेते हैं. सी व्हाट इस इमेज को क्या कहेंगे? Okay, guys, just see this image. Is it soft, right? There is no shadows. कोई shadows नहीं है. So look and feel क्या है इस इमेज का? It's the, you can say soft light, or you can say in terms of quality हम क्या कहेंगे? Is a soft, right? ये लाइट की क्वालिटी जो है वो soft है. See another image. Have you seen this one? There's a harsh shadows, right? So in terms of quality, what you can say is the hard light. So when we are talking about the quality, either there will be the soft or there will be hard, nothing else. और कुछ नहीं होता. So once you are doing lighting, you have to decide that which kind of light that I want to use. Either it will be soft or either it will be hard. Hard light होगा तो what the meaning of it, and the soft light. So this kind of things like the quality of light create a certain mood, right? So you guys have seen the hospital scene, right? Either in general or either in films. Which kind of light is there? Very soft light, right? Is there? Yes, sir. The things is that is replicate the mood that is very cool and calm, right? बहुत ही cool and बहुत ही calm, बहुत ही subtle amount of light होता है. Either in working environment, some offices, it's very soft light is over there. There's no hard shadows, right? See the workers in the factory में or somewhere else. See how hard light it is, right? So क्या फैक्ट्री में तुम्हें एक सॉफ्टनेस की फील आती है जो एक हॉस्पिटल में सॉफ्टनेस की है, एक उसमें फील आती है? क्या वो सॉफ्टनेस होता है वहां पर? साइकोलॉजिकली दैट आई एम आस्किंग. मैं इसको वो सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा हूँ. आई एम जस्ट आस्किंग कि साइकोलॉजिकली क्या लगता है द फैक्ट्री में सॉफ्ट लाइट से काम चलता है, रादर देयर विल बी द हार्ड लाइट? Hard light. हार्ड लाइट होता है. रीजन, डू यू फील दैट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट थिंग्स इज गोइंग ओवर देयर, हैपनिंग ओवर देयर? यहाँ बहुत कूल है, बहुत कामनेस है. थ्रू दैट लाइटिंग यू फील दैट? नहीं ना, नहीं No, फील होता sir. है. इन साइकोलॉजी ये फील नहीं होता हमें बिकॉज ऑफ द हार्ड लाइट, राइट?
So the things is that अभी मैं just for example I'm telling that अभी मैं इस पे और discuss करता हूँ, discuss on it. So it means what I'm talking about is the quality of light can create a mood for it, right? Can create a mood. Through quality of light you can create a mood. So how it will create the mood? अभी हम कुछ films के example देखेंगे and then we'll discuss on it. हाँ. What happened? Give me 1 minute, guys. Just give me 1 minute. Come. क्या नहीं है? ये लो. ये लो. Okay, thank you. चलिए मैं इसको भी हटा कर. See this image, guys. You guys have watched this film, No Country for Old Men? Yes, sir. Okay, you guys watch. So see in this one, is there hard shadows? Yes, sir. Hmm? So if you guys have watched this films, you know the genre, you know the mode of this films, no? और इससे एक और एग्जांपल लेते हैं. You guys watch Godfather, right? यहाँ से स्टार्ट करते हैं. You guys have watched Godfather? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. There's the opening scene, right? Where the daughter, sorry, बेटे की शादी हो रही होती है, right? There's the opening scene, no? Yes, sir. Yes, sir. So you guys have feel difference in this lighting and this lighting. अभी ये image थोड़ा सा कुछ I think distort लग रहा है मुझे. With this lighting and that lighting कुछ difference है. Yes, sir. Yes, sir. The previous one जो wedding वाला है, it is more brighter, right? Yes. The previous one जो अभी हमने दिखाया था आपको, is it more brighter and this one? So basically, in terms of when we are talking about the lighting, there's a, you know, in terms of quality, a quality को depict करते हैं दो तरीके से when you are doing lighting. It can say it's the low key lighting or high key lighting, right? और दोनों में differences क्या होता है? Low key and high key में. You guys know the contrast, right? Contrast is difference between tones, right? Normal contrast की बात करते हैं कि simply अगर बात करें in terms of ऐसे ही, तो contrast means the difference between two tones, right? Like the black and white, is that difference, right? अभी मैं अपने background से कितना stand out कर रहा हूँ ना? The reason I'm wearing black and something in the white in my background, right? So क्या हो रहा है? मैं बहुत ज़्यादा stand out कर रहा हूँ. Reason is the difference. Reason is the contrast. Do you guys feel that was the difference? How you decide this is day and this is night? In the visual perception, how we decide this one night? क्या चीज है जिससे हम डिसाइड कर देते हैं this is night or this is day? Tell me faster. Low keys and high keys can you say? Yeah, Low keys. night Would you has say? more contrast. Not the more. This just the think about it. It's just the contrast through which we decided this is the day or this is the night. Daytime has the low contrast, right? And the night have the high contrast, right? कि नाइट जैसे ही पता चला बिकॉज देयर विल बी हाई कॉन्ट्रास्ट. जैसे यहां पर क्या दिख रहा है आपको? इन दिस इमेज देयर इज अ हाई कॉन्ट्रास्ट, राइट? और इसमें क्या दिख रहा है? इसमें क्या दिख रहा है?
Low contrast. There is a low contrast, right? उसमें high दिख रहा है, इसमें low दिख रहा है. Not just think about the mood, ना कि ये जो low contrast, which kind of mood it creates? The joy, happy, right? Yeah. Is it creating or not? और literally film में भी वैसा ही माहौल है, वही दिखाया गया है ना, right? Which kind of mood, if you guys have watched these films, the wedding is going on, right? So how the happily faces is there, right? See the cloth and costume, right? See the light on everyone's faces. Is it bright? Is there less contrast? Right? See previous one. What you can say? Is there high contrast? Yes, sir. Okay. So now if there will be the high contrast, you can say there's a अभी बहुत hard light वो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ना, बहुत high light नहीं आ रही है. So you can say that if there will be the high contrast, it will be the low key lighting. We'll discuss on key fill also. It's called low key lighting, means there will be the high contrast. If there will be the low contrast, it means there is a high key lighting. Like this one. This one. There's a low contrast, so you can say that this is the high key lighting. Where there will be the high contrast, you can say this is the low key lighting. And have you seen the differences once we started from here, right? Right. They started from here, right? So now what you can say for this image? Is It's a high contrast image with High low key contrast. lighting. high contrast means what you can say? Which kind of key lighting is? Low key light. Low key lighting, right? Because you know क्या हो रहा है यहाँ पर contrast बढ़ रहा है, even की shadows area को और negative fill दिया जा रहा है to get it more contrasty, right? Read it once. Now think like that. No? Why there will be the contrast? Contrast से क्या मतलब है? There is separation or there will be the two part, right? If someone have, like some person have the two kind of personality, जो आपके सामने कुछ और है, and you know the rest of the things, अंदर उसके कुछ और चल रहा है, right? Do you feel that there is a contrast for that character, right? Yes, sir. There will be, right? और कोई ऐसा कैरेक्टर जो everything, you know everything about him, ऐसा कोई part उसका नहीं है, ऐसी कोई चीजें नहीं है, that is hidden, right? That's not hidden at all. उसके बारे में क्या सोचोगे आप? Let's think of what? You guys have seen this image. Just see this image. Yep. There's a high contrast, right, in the top lighting. Are you able to recognize the eye? Is anyone? No, sir. No, the eye is not visible, right? The eye is not visible. The reason is, you know, the everything that you're thinking, right? People can notice through your eyes what will be your next move and what you're thinking about, right? Through your face or lips, you can manage, but through your eyes, you can't lie, right? People can think what you are thinking right now, right? People can thought that कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. They can notice that. And the Godfather, this character is which kind of person it is? इसके next move के बारे में किसी को पता होता है? पता होता है? It's very suspicious, no? Yes, Right? sir. Very suspicious character, right?
So when this eyes is not visible, so there is certain kind of contrast, right? So it means something that is hidden, that is some suspicious kind of things. So look, think about this one. If there will be the high key, there will be the low contrast or high key lighting, do you think that kind of mood will create over here? No, sir. वो बहुत फ्लैट लगता है ना, जो वेडिंग में लग रहा था अभी, Yeah. काइंड ऑफ ना, तो वो साइकोलॉजी क्रिएट होता है और डार्कनेस की वो साइकोलॉजी क्रिएट होती है, अदर देन वो मूड क्रिएट होता है कि इज अ डार्कर थीम और डार्क थिंग्स. Even you can see through the windows, you can see the penetration of light is over there because outside there is a sunlight. But even then, just think about how the properties is. They use very dark properties. It means they absorb the light, won't reflect the light. So you can feel the darkness within the environment or that atmosphere, right? So within a same movie or after one shot to another shot, you can feel the mood through what? Through the two different kind of approach of lighting. One is high key, another is low key, right? So contrast is more related to your mood, which kind of mood that you want. It's very simple. It's ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा aesthetics, ऐसा कुछ नहीं है. Just think like that. No, it's a human psychology, right? Once you are in grief or you hurt it, right? At that point of time तुम क्या चाहते हो कि दिवाली जैसी लाइट लगा दो चारों तरफ? क्या करते हो? You want to feel that darkness, right? Light off करते हो, कम लाइट चाहिए, बहुत dim light चाहिए, right? You feel like that कि मुझे बहुत low key kind of things you feel कर रहे हो at that point of time. Low key lighting ज्यादा काम करता नहीं कि बहुत brighter. Suppose at the same point of time ना बहुत ही happily माहौल है, at that point of time क्या करोगे? ऐसी लाइट करोगे? नहीं ना. फॉर एन एग्जाम्पल तुम डिस्को में जाके हॉस्पिटल वाली लाइट लगा दो ना, बिल्कुल कूल काम लाइट, ही तो गाना तो बजे, नाच लेंगे, क्या वो फील क्रिएट होगा? No, sir. नहीं होगा ना. सो इट मीन्स ना कि लाइट क्रिएट द मूड्स, राइट? लाइट मीन्स द क्वालिटी ऑफ लाइट्स क्रिएट अ मूड, राइट? कि which kind of light that you want. And the one thing that I'll mention over there, it didn't mean that what I mentioned ki smaller the source and the harder the light, right? Smaller the source or quality will be harder. You can shape it, right? आप light को shape दे सकते हो. You can alter the light, right? How? By changing the source of those light, right? Suppose you guys have seen the reflectors, reflector, you have seen the diffusion materials. जैसे अभी मैंने आपसे बात की ना कि the curtains will be your diffusion, right? So at that point of time, your curtains become a source. So just like that, if something that can alter the source structure, right? जो source का shape है, if something, some diffuser that can alter the shape of your light will change the quality of light. अगर शेप में अल्टरेशन है, इट विल चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइट. इफ यू गाइस हैव, अगर घर में भी एक चीज आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, डिफ्यूजर लाके देख लेना. इफ देयर विल बी सम नेट इनसाइड योर विंडोज, राइट? विंडोज पे कई लोग नेट लगाते हैं, राइट? कि डस्ट ना आए या मच्छर ना, राइट? जस्ट सी व्हेन द सनलाइट इज फॉलिंग थ्रू देयर, तुम नेट से लाइट आने के बाद देखना, नेट भी लाइट काटता है, राइट? इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. Net also reduces the intensity of light, but it won't change the quality of light. The reason? Net will not alter the shape of light. Net कहीं से भी light के shape को alter नहीं कर रहा है. But जैसे ही आपने cloth रखा, क्या हो गया? या आपने curtains रखा, it will just alter the shape of light. Alteration हो रहा है. जैसे ही shape change होगा ना, once the shape will be changed, the quality of light can be changed. So definitely you can say that कि hard light could be the hard light can produce in terms of quality, आप उसे soft बना सकते हो, right? You can make the soft light. In terms of quality, you can make it soft, but soft को आप hard नहीं बना सकते. Is it possible? कि soft को hard बना दो? नहीं ना. It won't possible कि आप soft light को hard light बना दो. जिस light की quality है, is it the soft?
उसे आप हार्ड नहीं बना सकते, बट इफ देयर विल बी हार्ड लाइट, यू कैन मेक दैट लाइट सॉफ्ट बाय चेंजिंग द शेप ऑफ लाइट. लाइट का शेप जैसे ही चेंज होगा, वो लाइट अपने आप. यू गाइस हैव द टेबल लैंप राइट, जो ढका होता है कुछ इस टाइप का कवर होता है. उसे एक बार ओपन करके बल्ब जला के देखो, एक बार वो लगा के बल्ब जला के, यू कैन फील द डिफरेंस. इवन दैट द जो मैंने घर वाली बात बताई ना कर्टन्स की, यू गाइस कैन चेक इट आउट. So you can feel the differences. And why I'm mentioning over here, the reason what I'm following the question pattern of FTI. That's why I'm discussing these things, guys. Because मैं practically तो अभी आपको ये नहीं दिखा सकता हूँ, but you guys can do practical. इसको आप practical करके check कर सकते हो to make the light diffused, right? You can check is the quality changing or not, and I'll also give you one exercise. So वैसे तो करते नहीं हो, लास्ट टाइम भी नहीं भेजा है, तो फिर भी बोल देता हूं मैं. By using any kind of cloth, जो white cloth हो, either the curtains, just use your t-shirts, white t-shirts, yeah, t-shirt use करके check कर लो. White shot नहीं बन रहा है because t-shirt is smaller, so white नहीं बनेगा. Take a mid shot, even just check it out how shadows changed once we are using certain kind of diffusion, right? Or diffusion means मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, just change the source, you are just changing the source, right? मतलब सोर्स को आप बड़ा कर रहे हो, राइट? सो जस्ट ट्राई टू यूज द डायरेक्ट सनलाइट में इमेज क्लिक करके देखो, और द सेम कंडीशंस उस लाइट को डिफ्यूज करके चेक करो. यू फील व्हाट इज क्वालिटी इज, राइट? ऑल्सो इट विल रिड्यूसेस द इंटेंसिटी, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी देयर विल बी लेस शैडोज. जैसे ही कोई डिफ्यूजन लगाओगे, दैट विल अल्टर द शेप ऑफ लाइट. इट विल बी सॉफ्ट लाइट. ये सॉफ्ट लाइट प्रोड्यूस करेगा. So in terms of quality, is there any confusion, guys? कोई confusion है? No, sir. Sir, by taking these two images as example. आप एक काम कीजिए, do one thing, guys. जिसको पूछना है ना, related, just Yes, write ना, क्योंकि ये clear नहीं आ रहा है, थोड़ा break हो रहा है. Just write it. Okay, sir. Just write it. You didn't write this. Please explain it from no country replacement in nature of light. Okay, guys, just stop. You're talking about this image, right? Yes, sir. Give me one second. Sir, So you're not you're audible. muted.
Look, it's why it's in foreground. Now you can feel the depth. At least it will be contrast. Didn't mean that. One thing that I want to mention over there, when we are talking about the night and the contrast, it didn't mean that there will be shadows and full shadows. So it means if there will be whole image will be the shadows and everywhere there will be the shadows and highlights only, it will not create a sense of depth, right? Just think about, guys, just think about it. सब कोई ना अपने ना एक काम करो, do one thing, just cover the lamp. Right now मैं अभी इस पे नहीं कर सकता हूँ. Just cover the lamp with your finger. Just cover it, guys. Look how flat it looks. Is it? ये flat लग रहा है once you ignore the lamp. Just try to cover the lamp only. See, it look flat or not? Yes, sir. The reason the night or contrast didn't mean that ki wo pura ka pura it's look like there is a no depth, because once you are composing, the main things that always we will care about that things to create the illusion, because as earlier I mentioned, guys, there's only two dimension things on which you are watching images, right? Either the cinema halls or your phone or the laptop. It's only two-dimensional things. There is only width and height. So create that illusion that there is a depth, right? So every time once we are composing it, we just try to figure it out how to create the depth. So in terms of here आप एक बार चलिए ये background में भी दे सकता था, but the things is that your table name foreground में है and the character is a background. The one thing, it's also make frame symmetrical or balanced. Frame balance लग रहा है अभी? Because in the left hand side is the right hand side, right? Yes. Frame balance लग रहा है ना? And it also create a sense of depth. And one more thing, if it will be in the background, तो suppose if it will be the source, और अगर ये background में होता, so how much things that is in the shadows in the background, that area must be lit up, because you have to create illusion. If there is a lamp, that will be fall on the wall, right? So ये जो merging का sense आ रहा है that the character is merging in the background, वो sense खत्म हो जाता ना? वो sense खत्म हो जाता because it's create depth in the background, because that there is a sense कह सकते हो कि we are creating the depth through the background also, because in foreground there is a character and the background there is a lamp. But the things is that for this story or for this character ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर is just merging, right? यही लग रहा है ना? You feel that? Do you feel the separation of this character through background? Guys, no? Yes, sir. No, sir. Background से stand out नहीं है. Half of the bodies वहां पर curtain से लग रहा है, but throughout the head and face देखो क्या हो रहा है? The mind, these things, the face. ये किधर जा रहा है? Darker zone में जा रहा है. तो suppose if there will be light, वो क्या करता? एक contrast तो create करता, but the things is that character को stand out कर देता from the background, right? Here I'll also mention one thing. If you guys have watched the Grand Budapest Hotel, इस merging का एक मैं और example बता देता हूँ तुम्हें. If you guys have watched the Budapest Hotel, उसके लेफ्ट का जो सीन होता है लास्ट में, when ये lady is about to die, उसके बाद नेक्स्ट वाले शॉट में जो मर जाती है, लेफ्ट वाले सीन होता है. Everyone is wearing that the dress code of hotels, जो पर्पल है कलर है, but that lady wearing the रेड कलर का स्टॉल लेके रखती है वो अपने ऊपर. The things is that अब स्टोरी में क्या होता है, there is no role of him, so she is not standing out, she is just blending with the background. वहां वो सेंस था, so that's the reason उनको क्या किया, through the costume background से merge करा दिया. Here it will be कि ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं merge हो रहा है, so that's the reason वो background में नहीं है, वो foreground में है. And one more thing, it's my perception, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, you guys have the different options. ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल यही फैक्ट होगा. To explain films or explain the frames is totally subjective, but the things is that there must be logic. आप कभी भी explain कर रहे हो either in terms of lighting और कुछ भी आप explain कर रहे हो, at that point of time there must be logic of it. It's subjective. Maybe जो मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्टर का point of view नहीं है,
but whatever I understand through the framing or through the lighting, वो मैं अपना point of view आपको बता रहा हूँ. It may be आप किसी और नजरिए से इसे देखोगे, you have some different perspective, right? So ये देखने का perspective बहुत ही subjective है, right? But वहाँ logic होना चाहिए कि ये logic क्या है, right? And you answer that the lens is used in front of the light. अभी मैं वो discuss करूंगा तो बहुत ज्यादा time ले लेगा, but you just write these questions. जब मैं lens के optics पे आऊंगा, then I will discuss it. So guys, I don't think कि इसमें यहाँ तक में कोई problem है intensity और quality में. Was it clear? Yes, हाँ sir. बोल दो यार थोड़ा जोर से. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's it. You got the exercise also. क्या करना है? I want 2 images, the same conditions. There will be the in terms of quality, एक hard और एक soft, जो आप click करेंगे ना कि download करेंगे. Either through your phone, you guys don't have the camera, जिसके पास नहीं है, through the phone you can capture. मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि आपको मुझे भेजिए ना भेजिए, that's another things. But for yourself to understand the light, because if you follow the question, if you follow the pattern, most of the questions जो आ रहे हैं आपको subjective में, it's related to the lighting conditions where they ask it, right? So if you know the quality, if you know the intensity, you can discuss it in better way. So that's the reason I'm just discussing this things. कि तुम जरूरी नहीं कि उसी को करो, मैं उसी लाइट को पहले फील करो, right? The first thing is try to capture it, feel it. What's the difference? कि क्या हो रहा है डिफ्यूज करने के बाद, क्या हो रहा है कर्टन से लाइट लगाने के बाद, right? So जब रियल चीजों को आप फील करो at point of time, it's easy for you to explain it because it's your personal experience, not from some PPTs that you read or heard, right? So अगर वो personally आप करते हो, you can explain in the very good way because you experienced it and you just write it about those experience. यार वहां से if last year के questions if you followed, right? उसमें क्या कुछ ऐसा ही तो सिचुएशन था ना कि अपने बेडरूम से निकलते हो, कुछ ऐसा लाइट वहां गिरती है, एक मिरर है. So if you feel those things, start looking for it. At early in the morning, which kind of light is falling? Which kind of, now you can say that this kind of quality of light. Morning में कैसी light होती है? Which kind of color it produced? कितने देर तक ऐसा color रहता है? Is the difference the sunrise sunset में क्या हो रहा है? Is it for the long time or short period of time? So start looking for those things. तुम्हें PPT पे depend होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You have your own experience and जब अपने experience को आप बहुत ही बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. सो दैट्स द वन रीजन मैं हर एक टॉपिक से एक एक्सरसाइज रिलेट कर पाता हूँ. आप ना भेजो, ये आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, राइट? बट क्वालिटी को फील जरूर करो, लाइट की क्वालिटी को, बिकॉज मेनी थिंग्स दैट रिलेटेड टू द क्वालिटी. मैं अभी 1-2 इमेजेस आपको दिखाया हूँ, राइट? द एस्थेटिक्स ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू दैट. देयर इज अ मेनी फिल्म्स, अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा तो मेनी फिल्म्स इज देयर जिसमें कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आप लाइट को डिस्कस कर सकते हो, लाइट के बारे में बात कर सकते हो. See, soft light में क्या है? There is a key and fill also, but the thing is that there is a hard shadows, there is a less shadows. आप ऐसे एग्जांपल मुझे बना के भेज सकते हो, राइट? चलिए, now you guys see this image now. Through the shadows, can you recognize the from where light is coming? Anyone can recognize? Yes, sir. Right Right. side. Right. From this side light is coming, and how much angle it could be? 45 degree. Kind of 45. Why you understand why it's not the 990? Because it's a Rembrandt lighting. Because also it's cast some shadows and passing the lights over there, right? Right? Because frontal क्यों नहीं लग रहा है? Frontal होता दोनों साइड लाइट होती, right? लाइट Right. की हाइट कितनी लग रही है above the character?
Yes. right? Light की height above the character है because shadows have the longer shadows, sorry, nose have the longer shadows, right? Right. Light जब ऊपर होगी तभी तो shadows नीचे ज्यादा जाएगा ना, right? Yes, sir. So throughout the shadows, you guys can recognize the direction, right? Right. Yes, sir. Direction recognize कर लिया आपने, कहाँ से light आ रही है, पता चल गया ना shadows से। कई बार इंटेंसिटी से ही पता चल जाएगा, कोई छोटा सोर्स यूज कर रहे हैं तो, राइट, लाइक द टेबल नेम, इंटेंसिटी से पता चल जाएगा। टेबल नेम नीचे की तरफ है तो हैंड पे देखोगे ज्यादा लाइट है, फिर धीरे से लाइट कम हो रही है ऊपर, राइट, पता चल जाता है ना। Why the direction is important? अब एक चीज, थ्रू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अब इसमें मूड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बताइए कुछ। इस दोनों इमेज में डिफरेंसेस लग रहे हैं आपको, राइट? अभी मैंने आपको डायरेक्शन का एक एग्जांपल दिखाया था, दैट द प्रीवियस वन, द गॉडफादर वन, राइट? डायरेक्शन क्या था? Top. टॉप लाइट, राइट? टॉप लाइट से क्रिएट हुआ कुछ, Eyes में डायरेक्शन shadows. मूड क्रिएट हो रहा है, राइट? इट्स लुक सस्पिशियस, राइट? आप वहीं पर देखोगे, जस्ट लुक एट कि जस्ट लाइटिंग फ्रॉम द 90 डिग्री, there will be no shadow this side, for this side there is another color of light or another things, इसका shadow उधर नहीं जाना है। ये split character दिखाता है, दिखाता है, half of the face is too bright, half of the face is too dark, होता है ना? Yeah. Is why it's happened, through the direction you decided, right? Through the direction you decided, and also through the direction you can decide the source, right? Suppose ना लोग बिलीव कैसे करेगा कि हमें फिल्म में क्या होता है, we are using artificial light basically, right? But motto क्या होता है, what is the motive of it? It's look natural, right? To create a natural look, we have to use artificial light, but the way in which you use those lights, that create the feel of natural light, right? नेचुरल लाइट में हमेशा शूट नहीं करते ना, नेचुरल में भी करते हैं तो उसके साथ अल्टरेशन होता है, राइट? सो बेसिकली वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल लाइट टू क्रिएट अ लुक ऑफ नेचुरल। तो अब नेचुरल लगने के लिए क्या करना होगा? यू हैव टू फॉलो द डायरेक्शन। डू यू फील फ्रॉम सनसेट टू सनराइज डायरेक्शन ऑफ सन इज रिमेन सेम? No. So it means in your script, I hope there will be every time that they mention the time, right? The daytime, night time, at 2 p.m. and 1 p.m., right? They mention, no? Yes. Right. So if they mention it, so at 1 p.m., what will be the direction of sunlight? Yes, it will not same at the 4 p.m., right? The shape of the shadows, direction of the shadows will not remain same at the same place once the time have been changed, right? So according to time, shadows have been changed. So it means they are changing the direction of light basically. So you have to notice those things कि भाई shadow change कैसे हो रहा है, कब change हो रहा है, किस time पे क्या हो रहा है. So according to that, you can shift your artificial light. उस light को आप shift कर सकते हो. Suppose for an example, if the light will comes from the, you have to create the illusion that the light is coming from the candle, and you put the candle on table, right? अब तुम्हारे nose के shadow क्या नीचे आएंगे? Suppose करो मेरे टेबल पे, तुम जहां बैठे हो उस टेबल पे कोई कैंडल रखा है, it will be lower than the character, na, right? Obviously, कैरेक्टर से नीचे होगा ना, तो क्या उसका shadows, ये hard light वाला जो example, whatever the example you feel in the left hand side, the hard light, do you get the same kind of shadows? No. No. The direction, No. वो क्या होगा, ऊपर Direction जाएगा will be shadow, right? upward. Upper part, right? So to create a natural look of it, you have to choose the direction of light according to the source, right? कि हमारे source का direction क्या है, you have to use that direction only. अब कहीं ये नहीं सिर्फ color orange हो गया, yellow हो गया, and it's look like the light is coming from the candle. It's not like that. Direction is more important, people, because people can notice भाई light जब यहाँ से आ रही, shadow कहाँ जाएगी, right?
So that's the reason direction is more natural. कि हम जहां से लाइटिंग कर रहे हैं, जहां से लाइट सोर्स दिखा रहे हैं, वहां से लाइट आती है. Why in हॉरर फिल्म्स हमारे यहाँ के तो खास करके ज्यादा हॉरर फिल्म में क्यों नीचे से लाइट करते हैं? रीजन क्या है पता है? हम आपको देखने की आदत कैसी है नेचुरली ना, योर शैडोज, आपके जो शैडोज होंगे वो कहाँ फॉल होंगे? यहाँ का शैडो, अपर लिप्स का शैडोज नीचे फॉल होगा, राइट? लोअर लिप्स का शैडोज नीचे फॉल होगा. ये आंख के शैडोज यहाँ पर आएंगे, राइट? आपका जो ये क्या आईलेस कहते हैं, व्हाटएवर, आईब्रो, इसकी शैडोज नीचे फॉल, यही देखते हैं ना हम हल्का सा. फिर दिखना भी होता है तो लाइट ऊपर से आती है, यही होता है, ऐसा ही दिखता है ना. बट वंस वी आर यूजिंग सम हॉरर लाइटिंग, उसमें क्या करते हैं हम? ये क्यों हॉरर दिखता है? तो मैं इतना हॉरर नहीं दिख रहा हूँ, थैंक्स बिकॉज लुक लाइक दैट ना, अपर लिप्स का शैडोज ऊपर जा रहा है, राइट? हमारे यहाँ का शैडोज ऊपर जा रहा है ना. सो इट्स लुक अननेचुरल, राइट? और हॉरर के अननेचुरल चीजें ही ना, Right. राइट? अननेचुरल चीज ही है ना हॉरर. अननेचुरल नेचुरल थोड़ी है. Right. नहीं ना, जैसे नदी, पेड़, पहाड़, भूत, ऐसा थोड़ी है, होता है? नहीं ना, नहीं है ना. इट्स अननेचुरल थिंग्स जो नेचुरल नहीं है बेसिकली. सो दैट्स द रीजन टू क्रिएट दैट इल्यूजन. हम क्या नीचे से लाइट यूज करते हैं भाई ये अननेचुरल लगे, तो नेचुरल तो ये है. तो क्रिएट दैट नेचुरल लुक बेसिकली यू हैव टू see the direction from where light is coming, and it's up to you how you choose the things. कि मैं 90 डिग्री पे रखूंगा, मैं 45 पे डिग्री रखूंगा, मैं सामने रखूंगा. It's totally depend up to you, but you must have the logic of it, why you are using this direction, what you want to create. You want that the triangle over here, that's called the reverend. You want the split of things because you want another things, or you want the flat light, right? So it's totally depend up to you. So direction is depend up to you how to choose it. Okay, guys. So take a short break of 10 minutes. I'll resume by 10, right? Okay, sir. Okay, guys. Take a short break, 10 minutes. Okay. So you got the direction, right? Yes. चलिए next year. Okay, four things now that we have discussed: the intensity, quality, direction. The fourth one is called the texture. As usual, हम texture किसको समझते हैं? Anything have certain surface, right? हम surface से relate करते हैं texture को, right, guys? कि something have, you know, the matte surface, flat surface, something have very shiny surface, right? हम texture को इसी से relate करते हैं. But how it comes when we are talking about the lighting, right? So it's depend upon like when light is falling from somewhere, right? So if you put something in front of the light, right? मैं एक example बताता हूँ तुम्हें कि have you seen the haze, right? Haze देखा होगा ना आपने, haze of light, right? Or have you seen the beam of light? In beam of light में बहुत सारे haze होते हैं, right? Dust particles होते हैं. You guys can feel it? या अर्ली इन द मॉर्निंग, उस टाइम में जब सनराइज होता है, आपको क्या कहते हैं, विंटर के टाइम में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, have you seen that through the fog some elements of light is coming, the particles of dust particles in the fog,
Have you feel that एक softness होती है उस light में, kind of. I'll just get in this kind of texture what I'm talking about. Have you seen somehow this kind of light? Yes, sir. Yes. दिखता है? So is there a texture? एक hardness लग रही है ना light में? एक Yes. texture है light का, you can feel the texture of light, right? So just Yes. think about the early in the morning, जब बहुत fog सा होता है, at that point of time you can feel that which kind of light is coming and which kind of texture of it, कि उसका texture कैसा रहता है. So in terms of texture, इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि टेक्सचर एक तो लाइट का अपना टेक्सचर होता है, दूसरा होता है टेक्सचर ऑफ द कैरेक्टर, जो सरफेस अपना जो फेस है कैरेक्टर का, उसका सर टेक्सचर कैसा है, राइट? जैसे कि फॉर द प्रोडक्ट मैं आपको एक मेटल का कुछ दिखाता हूँ, इसका अपना एक टेक्सचर है, राइट? साइन है. वैसे ही फेस का एक अपना टेक्सचर होता है. यू कैन क्रिएट इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, जो कह रहे हैं कि हम उसको थोड़ा सा क्रिएट भी कर सकते हैं by shaping the light, by altering the light, by type of shadows, कि shadows कितना hard, कितना soft, उस quality को कैसे maintain करना है, that also create a texture. जैसे कि मैं आपको एक previous image दिखाता हूँ that we have seen. Have you seen the difference in terms of texture of a skin? दोनों में difference है, guys? Yes, sir. Yes. ये क्यों है? Because of the light, right? ये लाइट को शेप करने के बाद आप थोड़ा सा टेक्सचर जो है उसका चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ शैडोज, राइट? तो एक तो टेक्सचर लाइट का हुआ, दूसरा ये टेक्सचर कैरेक्टर से भी इनबिल्ट होता है कि आप उस लाइट को कैसे शेप दे के कैरेक्टर से टेक्सचर चेंज कर सकते हैं. एंड टोटली इट्स डिपेंड अपॉन, यू नो, टेक्सचर इज वेरी थिंग्स, it's depend upon which kind of material that you are using to diffuse the light. Have you seen your face and hard light when it's falling on your face? See your texture when the direct sunlight is coming on your face. See the texture when the tube lights is falling on your face. See the differences, capture the images, see the differences, that creates a texture. तुम्हारे स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाता है ना? तुम हो वही, तुम्हारा स्किन वही है, ड्यू टू लाइटिंग टेक्सचर तुम्हारा ये जो है टेक्सचर चेंज, ड्यू टू लाइट तुम्हारा ये जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है. So the four things, the fifth will be the, it's very simple. This one is called the color. Should you know the light have the color, right? Which color that light have? White light होती है सॉरी ना? सर, क्या बोला आपने? कलर, लाइट का कौन सा कलर, जो व्हाट द विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सी लाइट देखते हैं आप? इन टर्म्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम में कलर पूछ रहा हूं. इज इट व्हाइट लाइट, राइट? यस व्हाइट लाइट देखते हैं ना जी. विजिबल स्पेक्ट्रम में, दैट द सेवन लाइट्स कम्स टुगेदर इट विल प्रोड्यूस द व्हाइट लाइट, राइट? जो विबग्योर बनता है, वायलेट, इंडिगो, दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम, राइट? करेक्ट. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विब, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट? That is a visible spectrum. उसमें जो भी तो साथ जब सारी लाइट्स मिलती है, it will produce the white light. सनलाइट का कलर क्या है? वाइट. अब यहाँ से आपको जो मैंने लास्ट टाइम पूछा था वो इसी से रिलेटेड था. अगर आप इसका आंसर दे देते तो अच्छा था. प्रयास के नियम क्यों नहीं भेजा आपने? कोई भी एक बता दीजिए, आंसर दीजिए, क्या प्रॉब्लम थी? क्वेश्चन नहीं समझा या there is another problem? Other you don't want to discuss? क्यों नहीं भेजा था? कोई, any of you just answer. मैं भानु, या राइट? भानु प्रकाश, बिकॉज सिर्फ आपने भेजा है एंड यू डिस्कस इट वेल, सो मैं तुम्हें पर्सनली मेल कर दूंगा, ठीक है? इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग ओवर हियर, ठीक है? Okay, मैं sir. आपको पर्सनली मेल कर दूंगा. यू गिव मी 3 images, राइट? एंड यू कैप्चर इट वेल. सो भानु, जस्ट एक्सप्लेन इट. You feel any difference or not?
in 3 images in terms of visuals, in terms of shadows. अगर तुम अपने इमेज को अभी देख लोगे ना, अभी खोल के देख लो अपने इमेज को, जो बात अभी मैं बता रहा था in terms of quality, you feel that difference in this images, in your images. फील हो रहा है? हाँ सर। In terms of quality पता चल रही है लाइट की? Just forget about the intensity. Quality पता चल रही है? हाँ सर। अब डिफरेंशिएट, अब एक चीज और आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने इस फ्रेमिंग में, किस चीज के बारे में? आप लाइट की क्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं। अब एक आपको एक एस्पेक्ट मिला बात करने के लिए, किसी चीज के बारे में लिखने के लिए। वंस यू गॉट सम फ्रेम्स, सिर्फ आप फ्रेमिंग के बारे में नहीं लिखोगे ना, यू हैव टू राइट अबाउट द कंपोजिशन, यू हैव टू राइट अबाउट द लाइटिंग। अब एक एस्पेक्ट आपको मिला क्या, द क्वालिटी, यू कैन राइट अबाउट इट। और तीनों चीजों का डिफरेंस जो है वो दिख रहा है, क्लियर विजिबल है आपके इमेज, राइट? हाँ So सर। that's another thing, guys. You guys didn't need it. I think आप लोगों को पहले से पता है, so no worries. चलिए अगला क्या है? द कलर। अभी मैंने क्या कहा, सिर्फ व्हाइट लाइट होती, नो, दो टाइप की लाइट जो हम यूज करते हैं, that the daylight is the white light and the tungsten that the yellowish light जो हम यूज करते हैं. You guys have seen the filament on it. इस फिलामेंट में जो स्प्रिंग्स होता है, it's called the tungsten. Why its name is tungsten light कहते हैं उसे. And every single lights, जो भी लाइट सोर्स है, the artificial जो हमारी ये लाइट्स है, सारी लाइट से कलर प्रोड्यूस करती है, राइट? Either whatever light I am using over here, either at your household, which kind of color you feel. अगर मैं ट्यूबलाइट की बात करूं तो लिटिल बिट ब्लूइश, अभी के टाइम पे यही फुल फील हो रहा है ना। घर वाली लाइट थोड़ी व्हाइटिश, थोड़ी ब्लूइश लगती है, राइट? लगता है ना? कैंडल की लाइट क्या लगती है आपको? Orange. Candle is warm, right? Orange, right? So Right. it's not the orange. You can say that the whatever the blue light, ये जो आपको दिख रही है, जो household light है, either this light, I'm showing you guys. अभी मेरा change हुआ कुछ? On my face, is it change or not? Does it look bluish? Right? हो गया ना? So you can say that this look cooler, cool color. Yes At the same point of time, this become warm, right? Yes sir. तो यू कैन से ना, अगर मैं ये कहूँ दो टाइप की लाइट है, कौन सी लाइट है? कूल लाइट है, वार्म लाइट है। कह सकते हैं ना, कूल है और वार्म है। यहीं पर तो कह सकते हो ना यार, अभी देखा ना, कूल चेंज है भाई, वार्म हो रहा है ना। हाँ सो सर। एवरी सिंगल लाइट्स प्रोड्यूस क्या करता है? कलर प्रोड्यूस करता है, राइट? जो वेवलेंथ, जो विजिबल स्पेक्ट्रम हमें दिखता है, दैट हैव अ सर्टेन कलर। और इन टर्म्स ऑफ कैमरा की जब हम बात करें तो जो भी लाइट आ रही है, बेसिकली दैट लाइट विल प्रोड्यूस अ कलर एंड दैट कलर इज मेजर्ड इन कलर टेम्परेचर, राइट? आप लोगों ने कैमरा यूज किया होगा, उसमें देखा होगा डे लाइट, टंगस्टन वो रहता है। तो ये जो कलर टेम्परेचर मेजर किया जाता है, किसने मेजर किया जाता है? केल्विन में मेजर किया जाता है, राइट? जो भी लाइट्स आ रही है उस कलर टेम्परेचर होता है, जो कलर आ रहा है उसका एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, दैट इज मेजर्ड इन कलर टेम्परेचर। सो टेम्परेचर डिडंट मीन दैट द हाउ मच इंटेंसिटी और हाउ मच हीट इट विल जनरेटेड, उससे मतलब नहीं है। कलर टेम्परेचर, वो कलर जो पर्टिकुलर आ रहा है उस कलर का टेम्परेचर क्या है, दैट इट इज, राइट? एंड इट इज डिनोटेड इन द केल्विन। सो डे लाइट हैव द, किसी को पता है 5600 5,000 Kelvin. कितना? 5600 5600 Kelvin, right? And the tungsten at 3200 Kelvin, right? वही है, 32 से 56 से दो ही चीजें याद रखनी, 3200 and 5600. Now the reason is कि ये हम यूज क्यों करते हैं? हमें तो व्हाइट बैलेंस होता है कैमरे में, राइट? क्यों करते हैं व्हाइट बैलेंस? बिकॉज हमारा जो ब्रेन है ना, वो काम करता है, ऑटोमेटिक फंक्शन कर जाता है। वंस यू सी द कलर्स, वो जज कर लेता है, दिमाग को बता देता है इट्स ग्रीन लुक ग्रीन, ब्लू लुक ब्लू, वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप, राइट? बट फॉर द कैमरा यू मस्ट हैव टू टेल। ऐसा हुआ है कि घर में हो तो बहुत ब्लू लग रहा है, बाहर गए तो बहुत व्हाइट हो गया, ऐसा आंख को नहीं होता ना। आंख अपने आप
मैनुअली सॉरी ऑटोमेटिकली फिक्स कर लेता है, बाहर जाते हैं अच्छा ऐसा दिख रहा है, राइट। बट तुम्हें दिमाग को करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट फॉर द कैमरा यू मस्ट हैव टू इन्फॉर्म द कैमरा विच काइंड ऑफ टेम्परेचर दैट वी आर यूजिंग। अगर वो नहीं बताएंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। You guys have many times faces this problem with your cell phone कि अभी बाहर जाके क्लिक किया ना तो बहुत ग्लोइश सा आ गया, हो जाता हो कई बार, अब बाहर से अंदर बहुत वार्म सा हो गया, रीजन कुछ ना कुछ तो होता होगा। उसका रीजन ये है कि कैमरे को आपने बताया नहीं कि विच द लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन योर सेंसर, व्हाट इज द कलर टेम्परेचर ऑफ दिस लाइट, इस लाइट का कलर टेम्परेचर क्या है, आपने कैमरे को इन्फॉर्म ही नहीं किया। तो अगर कैमरे का कलर टेम्परेचर अवेलेबल लाइट से कम है तो क्या हो, एनीवन हैव द आंसर? अगर कैमरे का कलर टेम्परेचर अवेलेबल लाइट से कम है, इट विल अपीयर, अभी जो आपके सामने इमेज दिख रहा है वैसा ब्लूइश अपीयर होगा। सपोज करो यू सेट योर कैमरा ऑन 3200 एंड यू जस्ट वेंट आउट ऑन डे लाइट, will appear, there will be the bluish image, the more bluish image you will get. जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। one second. Yes. हाँ जी, सो क्या होगा, फिर आपके कैमरे का कलर टेम्परेचर कम है और अवेलेबल लाइट की कलर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, आपका इमेज ब्लू अपीयर होगा। एंड द सेम फंक्शंस रिवर्स कर दो तो उसका रिवर्स क्या होगा, ब्लू का रिवर्स क्या होता है कूल कलर का, वार्म, राइट। तो अगर सीधा अपोजिट होगा इट विल अपीयर वार्मर, वो आपका क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। अगर आपके your camera have the greater color temperature than the available lights, उससे अगर ज्यादा है तो हो जाएगा। तो होगा क्या बेसिकली, अब आपको आंसर मिल गया होगा। बेसिकली वंस यू आर इंडोर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका कैमरा ऑटोमेटिकली सेट फॉर द टंगस्टन, राइट। इंडोर में थे टंगस्टन पे सेट कर लिया था व्हाइट बैलेंस। वंस यू गो आउटडोर फॉर द कैमरा इट्स ऑटो मोड, सो फॉर द सेंसर इट टेक्स टाइम टू रीड, अरे क्या आ रहा है, तब तक आपने कैप्चर कर लिया। तो whatever the previous color temperature that your camera के ब्रेन में, कैमरा के मेमोरी में जो फीड था उसी पे उसने क्या क्या कैप्चर कर लिया। बट नाउ whatever light is coming that is daylight, so that's the one reason sometimes in your phone you got that कि अरे अचानक bluish image आ गया। बट इन योर कैमरा इट मीन्स अगर bluish image आ रहा है तो सिंपल सा है, अगर ब्लू आ रहा है या वार्म, अगर ब्लू आ रहा है तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर कलर टेम्परेचर, कैमरा कलर टेम्परेचर इज लेसर देन the whatever the available light. The same things if you appear warmer you can feel that अरे यार मेरा ना थोड़ा सा maybe ये थोड़ा सा ज्यादा है, I'm using a larger color temperature and now you can use it for your scene. Sometimes you can use it for your films also to make these films appear blue जैसा कि इसमें है। if you want that kind of scene, right, so क्या कर सकते हो, कलर टेम्परेचर light color temperature का ज्यादा होगा and whatever the color temperature your camera have there will be the lesser color temperature, so you got more bluish images. या warm करना होगा तो color temperature बढ़ाना होगा, ठीक है। So the 5 aspect of light that you guys got to know, क्या क्या था, can we discuss it once? Direction, intensity, quality, color और texture, right? One second. तो now you guys can discuss about it, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। I can see
1 second. Okay, take it. हाँ भेजो. Go. Okay. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है द एस्पेक्ट ऑफ लाइट में? गाइस No, sir. नहीं है कोई? ठीक है. तो अभी आप कम से कम 2-3-4 एस्पेक्ट में लिख सकते हैं. टेक्सचर ओके, रेट दिस वन. सर टेक्सचर का एक बार फिर से बताइए. किसका? टेक्सचर टेक्सचर Texture. Okay, I'm just putting that. So how you relate to texture? Texture से अभी first things what it comes in your mind? क्या आ रहा है आपके दिमाग में? Surface of something, right? आ रहा है ना? टेक्सचर उसी को कहेंगे ना कि सरफेस किसी चीज का, राइट? अब हम एक टेक्सचर पे यहाँ बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ शैडोज ना. लुक, डू यू फील एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्किन सरफेस? Yes, sir. फील हो रहा है that the softness and on that skin there is a little bit hardness? फील हो रहा है उसके एज पे, स्किन पे, एज पे फील हो रहा है आपको? फील इट? Yes, sir. So that's the texture, and you can make these textures by using, you know, the different types of diffusion material, different types of lights. आप उससे डिसाइड कर सकते हैं. और दूसरा टेक्सचर ये भी होता है लाइट में कि लाइट का अपना एक टेक्सचर आप क्रिएट कर सकते हैं. दिस वन इज द लेफ्ट साइड. सी द एग्जांपल. हैव यू फील दैट ये अभी लग रहा है लाइट में टेक्सचर? एक हार्डनेस लग रही ना, एक इंटेंस लग रहा है इस लाइट में. यस सर. It's a kind of energy or power swing, right? If you guys have see the Padmavat, na, जब भी वो खिलजी का और उसका वो होता था, have you seen how much harsh backlight is falling and that backlight had a certain texture? दिखता था ना, or the beam of light और वहां पर जाके smoke और वो सारे texture दिखते थे. So see how the rusticness it is, right? So through the texture वो वहां डिपिक्ट कर रहे थे कि which kind of character he is. So एक तो वो होता है जो फेस पे जा रहा है in terms of वो भी texture है कि how soft you can make it, which kind of texture that you want. So that's the texture in terms of light, right? But mainly what we discuss about is the 4 things. Intensity, you first decide the intensity कितना use करना है, then decide the quality. Hard रखना है, soft रखना है, direction कहाँ से light करनी है, 4 things. कि भाई color क्या होगा, either day or tungsten, right? So color temperature में एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ. Here I am just discussing it. So basically ये जो color temperature है ना, somehow if you guys using camera, right, many times you feel that if you are capturing those images in your the whatever the ambient light is available, right, your room light में capture करते हो, you will not get the exact skin tone, right? Either you set the proper white balance. मिलता है आपको? क्या प्रॉपर स्किन टोन मिलता है आपको अपने हाउस होल्ड लाइट में? No. नो. अब रीजन क्या है? वो भी तो लाइट है, उसमें भी कलर टेम्परेचर है, राइट? प्रॉब्लम क्या है? Right. व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज एक चीज होता है, इट्स कॉल्ड CRI, कलर रेंडरिंग इंडेक्स, राइट? CRI का एक नंबर्स होता है, मेजर्ड इन 0 to 100 के स्केल पे मेजर किया जाता है. आर यू टू नो दैट कि दुनिया में एक ऐसा है इन टर्म्स ऑफ हम नेचुरल की अगर बात करें तो सनलाइट हैव द प्रॉपर CRI दैट्स 100. इट मींस टू रिप्रोड्यूस द एक्चुअल कलर, राइट? टू प्रोड्यूस द एक्चुअल कलर क्या हो रहा है हमारे ऊपर लाइट पर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपको दिख रहा है, राइट? So to produce the genuine color जो कलर है, right? So वो जिस लाइट की कैपेसिटी होगी that will be the 100, right? तो जिसका 100 नहीं होगा उसमें कहीं ना कहीं से 100 नहीं, in the sense कि 70 to 100, इसलिए एक स्केल बनाया गया for the cinema lights कि 70 to 100 जिस भी लाइट का है will consider it for the cinema lights. तो that will produce a genuine skin tone. वो proper skin tone देगा जो आपका skin tone है. It will not cast any colors. So you can feel that things once you are using in household light, you can feel that cast. चाहे आप 4200, 4300 proper set कर लो, आपको feel होगा.
होता है. The reason you light don't have that much of CRI. अभी few कंपनियां जो हैं, कुछ कंपनी जो हाउस होल्ड लाइट बनाती हैं, but that is very expensive. Either the Philips के कुछ देख लो, सिस्का की कुछ लाइट्स हैं, that the one LED is worth rupees 1200 1300 जो ट्यूब्स आ रहे हैं, they are giving not the exact, but it's just the nearby. It's not produce too much cost. Even you can shoot with those lights. मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, अब ऐसा थोड़ी होगा एरी का कंपेयर करेगा, बट जो नॉर्मल पहले हम यूज करते थे CFL एंड व्हाटएवर दैट काइंड ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय द चाइनीज LEDs, राइट. उस सब में अगर क्लिक करोगे, यू कैन फील दैट कि स्किन टोन वो कहीं से नहीं आता. देयर इज अ सर्टेन कास्ट, एंड दैट कास्ट व्हाई इट्स हैपेन, द रीजन इज the CRI. That light don't have that much of CRI. It's the less than 70, maybe 50, maybe 40. There is no certain measurement. And one more thing, it's not written on the lights. It's depend upon the manufacturer, how they used it. So after using those elements, people can get to know, is it giving proper 100 or not. So you guys have heard about the Godox and many companies that manufacture the LEDs. There's a new company, soon there are many companies that produce the LEDs. बहुत सारे चाइनीज कंपनी जो LEDs बनाती हैं. तो इट्स डिपेंड कि कौन अच्छा दे रहा है, किसका स्किन टोन अच्छा है, उसके हिसाब से अब पता चलता है कि ये एक्चुअल कलर टेम्परेचर CRI में है या नहीं है. सो इट्स, आप उसे चेक कर सकते हो बेसिकली, बट ये रिटर्न नहीं होता है. जैसे कि आप अपने घर का पता कर सकते हो क्या CRI सही है या नहीं है. Once capture it by changing the white balance, because you got to know little bit cool light, it means it will be more than the tungsten. So कितना होगा 4000 4200 जो एक लाइट का होता है, what it called the fluorescent light, right? तो फ्लोरेसेंट का 4200 होता है ट्यूब लाइट का. सो 4200 सेट करने के बाद भी you got a certain kind of cast on your face. The reason is white balance तो वही है, but the thing is that color rendering index CRI आपका proper नहीं है. That's the one reason वो cast करेगा. ठीक है? Sir, I have a question. Yeah, ask me. About color temperature. अगर Yeah. हम इंडिया में एक तस्वीर खींचते हैं ना, कुछ भी फोटोग्राफ 5600 केल्विन पे खींचते हैं, और वही सेम फोटोग्राफ लेट्स सपोज US में खींचते हैं, तो देयर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंस इन द पिक्चर. Yeah, वो obviously, थोड़ा it's totally depend upon, look, what is coming through the sunlight. It's coming through the, क्या आता है, विवग्योर ही आता है जो विजिबल स्पेक्ट्रम में आप देखते हो, राइट. सो एवरी कौन सी लाइट है, वायलेट से रेड तक की लाइट है, राइट. मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ that light have, the particular color have that kind of wavelength, right? उसी से कलर प्रोड्यूस होगा ना. सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन वो जो लाइट्स आ रही है, तो क्या हो रहा है, ऊपर स्कैटर्ड भी तो हो रहा है ना. So which kind of pollutions is totally depend upon geographical factor, which kind of pollutions, must distance कितना clear आ रहा है, कितने pollutions उसमें है, कितने particles ने रोक लिया है, तो वो जो light बच के आएगी उसी के according तो आप सेट करोगे ना. Have you ever went on the high altitude areas? Do you feel कि वहां पर इसी तरीके का white balance चल जाएगा? Yes sir. नहीं, वो थोड़ा bluish कलर आता है. Bluish कलर क्यों आएगा वो? क्यों आएगा वो? कल हिमाचल में बदल तरफ जाके शूट करके देखो तो क्या होता है. Where there is the sky is more clear, things see the differences. वहां पर दिल्ली में आगे क्लिक करके देखो, यहाँ तो कुछ दिन बाद सनलाइट पहुंचने ही नहीं देगा. सॉरी, यहाँ पर बहुत दिनों तक तो क्लियर स्काई दिखता ही नहीं है, द फॉग एंड द पॉल्यूशन ना. तो आपको लगता है सेम होगा, नहीं ना. एवरी सिटी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्स, उसका अपना वाइब्स है. either not even the sunrise or sunset में कह रहा हूँ, in terms of the pollutions और geographical factor बहुत डिपेंड करता है, उसके ऊपर white balance डिपेंड करता है. Exactly fix नहीं कह सकते कि आप अभी मैं 5600 यूज करूंगा मिल जाएगा. You have to manipulate it to get it right. वो बाय डिफॉल्ट एक मेजरमेंट किया गया 5600 का किस टाइम का. अब उसी टाइम पे बहुत लूमी क्लाउड है, क्या करोगे, राइट. थिंग्स विल बी डिफरेंट ना. Right sir. भाई हाई एल्टीट्यूड एरिया में पहुंचोगे तो थिंग्स विल बी डिफरेंट. सो इट टोटली डिपेंड अपॉन योर आईज. आप जो देख रहे हो, यहाँ आपको लग रहा है यहाँ मुझे स्किन टोन मिल रहा है, द थिंग्स इज दैट वन थिंग अबाउट द व्हाइट बैलेंस इज कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट टेक अ व्हाइट पेपर, पुट इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ट्राई टू कैप्चर द इमेज. ऐसे व्हाइट रखो, इमेज क्लिक करो. जैसे अभी देखो ये इमेज तुम्हें थोड़ा सा ऑरेंज लग रहा है, लग रहा है ना.
थोड़ा ऑरेंज देखो, ये ब्लू लगने लगेगा, लग रहा है ना? Yes, sir. बस व्हाइट रखो कैमरे के आगे में, व्हाइट पे सबसे ज्यादा कास्ट जज हो जाएगा ना, स्किन पे हो सकता है जज ना हो, बट इजी टू जज ऑन व्हाइट ना। दैट्स द रीजन उसको व्हाइट बैलेंस कहते हैं। तो व्हाइट के आगे लगाओ, व्हाइट बता देगा भाई इट्स ब्लूइश और वार्म, क्या हो रहा है, ये जो भी हो रहा है, यू गॉट द इंफॉर्मेशन, इसलिए व्हाइट बैलेंस करते हैं। Sorry. Okay. Now let's discuss about the lighting. एक बेस लाइटिंग सेटअप होता है, and always ये किसी भी lighting situations में you have to use these things. It's called the 3-point lighting, right? 3-point lighting means lighting from 3 different axes called the 3-point lighting. अभी as usual अभी तक हमने जो भी discuss किया है, I just mention one thing to create a sense of depth, right? So you guys have feel in your passport size photograph have the depth? नहीं, नहीं है ना, merge कर रहा है वो, right? So basically what is 3-point lighting is, as I mentioned, lighting from 3 different axes will called 3-point lighting, and the name is key light, fill light, and the batten. The key light is, अभी की लाइट को थोड़ा सा मैं रिलेट करता तो और समझ जाओगे आप। की लाइट एक इंटेंसिटी हमने बात की थी, राइट? तो विद इन योर सीन, या तो तुम एक सोर्स डिसाइड करोगे कि इधर से लाइट आ रही है, सनलाइट इधर से आ रही है, राइट? तो विद इन वन साइड और ऑल ओवर द सीन, मान लो फॉर एन एग्जांपल, देयर विल बी वन लाइट दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी इट विल बी हार्डर, राइट? सपोज फॉर एन एग्जांपल तुम्हारे रूम में सनलाइट आ रही है, राइट? विंडोज से तुम बैठे हो, तो लाइट एक तरफ हार्ड एक तरफ सॉफ्ट होगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम होगी। आप बाहर Yes, चल sir. रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड से सनराइज है, राइट? एक तरफ लाइट दूसरे तरफ लाइट नहीं होगी, या लाइट होगी, दोनों की इंटेंसिटी में डिफरेंस होगा। एक लाइट जो डायरेक्ट आपके फेस पे आ रही है, वन लाइट दैट इज फॉलिंग फ्रॉम द वन साइड, एंड द अनदर साइड यू गॉट दैट लाइट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द बाउंसिंग एलिमेंट, नीचे से बाउंस हो रहा है, वॉल से बाउंस हो रहा है, फ्रॉम एनीवेयर इट इज बाउंसिंग एंड दे जस्ट फिलिंग दोस shadows area basically. So what's the difference in terms of intensity, right? So you can say that what's the main, jahan par bhi the brighter intensity is the light, or either you can say the main source of light is called the key light. मतलब जिस लाइट से आपको ये दिख रहा है कि ये यहाँ वाली जो लाइट है, इधर से जो लाइट है, जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, अभी मेरे फेस पे, राइट, which area is more brighter? My Left. right hand side, right? Is it more brighter? Yes. The rest part is there light or not? There is light, but there's a less intensity, right? I know. Right. So now you can say this one is my key light. The name is the key light because this light have the higher intensity than the whatever the another light in frame, right? This light have the higher intensity, और जिसको तुम बनाना चाहते हो, right? That will be the key light. कि पूरे सीन में जहां ये दिख रहा है कि ये सोर्स, यहाँ से लाइट या जो भी है, ये एरिया और ये पार्ट ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट है, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हायर देन एनी लाइट दैट इज विद इन द सेम, यू कैन से इट्स द की लाइट, राइट? ओके, एक लाइट आपने बना लिया फॉर द प्राइमरी सेटिंग कि यहाँ से, सपोज फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने तुम्हारे घर का बताया, either it could be table lamp or either it could be anything, could be, right? fill light क्यों यूज करते हैं? बिकॉज सिर्फ की लाइट से काम नहीं चलेगा, राइट? टू फिल द शैडोज एरिया हम की लाइट यूज करते हैं, इट मस्ट बी अपोजिट द की लाइट, एक ही तरफ से तो होगा नहीं, राइट? इट मस्ट बी अपोजिट द की लाइट के अपोजिट उसे हम यूज करते हैं, दैट्स द फिल लाइट। इसका मतलब है, the things is that in terms of intensity, do you think that the key and fill light have the same intensity? No, sir. लग रहा है नहीं ना?
He'll have the less intensity, right? Yes, sir. He'll have the less intensity. Yeah. रहेगा ना? Yes, अब sir. कितना रहेगा ये पता करना पड़ता है किससे? थ्रू द लाइट मीटर, थ्रू द मीटरिंग मोड. और ये जो डिफरेंस है ना की एंड फिल का भी हमने क्या कहा? डिफरेंस है. डिफरेंस किसमें है? सो इट मींस इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग की एंड फिल अगर डिफरेंस है तो व्हाट इट विल क्रिएट? क्या क्रिएट करेगा ये? Contrast. Contrast, right? So now in terms of lighting, when we are talking about the ratio, either the lighting ratio, basically we are talking about the contrast ratio. जो हम सुनते हैं ना 2:1 की लाइटिंग की है, 8:2 की लाइट नहीं कहते हैं, 4:1 की लाइटिंग की है, 2:1 की लाइटिंग की है, 8:1 की लाइटिंग की है, 16:1 की लाइट की है, राइट? दैट मींस नहीं, राइट? जो लाइटिंग हम यूज करते हैं, टेक्निकल वर्ड जो टेक्निकली हम यूज करते हैं बेसिकली. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन की लाइट एंड द फिल लाइट. की और फिल के बीच का कॉन्ट्रास्ट क्या है? 2:1 मींस द की इज 2 टाइम बिगर देन द फिल लाइट. 4 means key is 4 times bigger than the fill light. 8 means key is 8 times bigger than the fill light. So that is called the ratio. Right? We are उस पे आएंगे, right? So difference between key and fill is create the lighting ratio, right? और इसी रेशियो जितना बढ़ता जाएगा देयर विल बी मोर कॉन्ट्रास्ट. इमेज आपका कॉन्ट्रास्ट ही होते जाएगा, रेशियो बढ़ते जाएगा, इमेज कॉन्ट्रास्ट वाला बनते जाएगा, राइट? सो दैट्स द लाइटिंग रेशियो ऑफ द की एंड फिल. Third one is called the backlight. Why use the backlight? Backlight to create, right? To create, to separate character from the background. To separate the character from the background. So just think about it. Now, अगर character को background से separate कर दिया, to creating that separation will make your character, to give your character a depth, right? तीसरा dimension दे देगा ना. One is just standing out to the background. It's not like the passport size. Passport look like the merging, but once there will be the background or backlight. Look, यहाँ मैं थोड़ा सा differentiate कर देता हूँ. Backlight की category में ही you can say the backlight or the background light. दोनों का काम एक ही है. Both have the same intention. Once we are using backlight or the background light, intention is remain same. Backlight कहते हैं whatever light that will fall on the character is the backlight. And the light that will fall on the background will call the background light. But both light have the same perspective, right? Perspective क्या है उसका? To create separation between character and the background. So backlight कह सकते हो या background light कह सकते हो, but वो तीसरे point में ही calculate होगा, right? So mainly we can say that 3-point lighting, key light, fill light or backlight, right? यहाँ तक clear है? Yes, sir. एक second, yes, someone. Right. Okay, guys, let's see another. See first image, second image, and third image. कुछ difference दिख रहा है? Yes. The first, when there is a key light, right? Sorry. Okay. When here's the key light. At that point, I'm see. You're not able to find the depth on face, right? Side का structure भी नहीं दिख रहा है. Face का उतना depth भी clear नहीं हो रहा है, right? When you use the fill light, it's create a certain, the gradation on face, right? From key to fill. Now you can travel little bit. पहला image background से merge कर रहा था, right? कर रहा है ना, due to that shadows. See the second one, to create the fill light, there's a difference in intensity between key and fill light. Now you can separate it. Key and fill light को पता कर सकते हो कि from the left hand side key light है, right hand side there's a fill. So it will fill light is just fill the shadows.
Now just think, it's again अभी भी ये background से merge कर रहा है. Here there is a backlight. Some blue line is over there, right? Difference दिख रहा है? Third image look more interesting or first one or second one? Is it third one? ये ज्यादा नेचुरल लग रहा है, क्रिएट डेप्थ, राइट? ये बैकग्राउंड से स्टैंड आउट कर रहा है, इसका पूरा स्ट्रक्चर पता चल रहा है, राइट? स्ट्रक्चर पता चल रहा है, तीसरा डायमेंशन पता चल रहा है ना, जो पहले वाले में पता नहीं चल रहा था, राइट? अब इसी में जो ज्यादा समझ में आएगा, सी द की लाइट, क्या हो रहा है इसमें? And key flash, rim light. It's two light सर जो setup. फेस पे नेगेटिव है वो भी नहीं आ रहा है की और रिम से। क्या? सर नेगेटिव जो की लाइटिंग से जो लाइक फेस पे ग्रेडेशन है वो रिम से रिम लाइट डाल के वो भी रिमूव हो रहा है। वो भी रिमूव हो गया, राइट? तो sometimes it isn't necessary that you can use whole lights. Sometimes contrast create that kind of depth, right? But the basics for the 3-point lighting is the key, fill and backlight. And for the backlight, there's a different name. जो ये वाली light देख रहे हो ना, rim light, जिसको आप कह रहे हो, it's called the kicker light भी कहते हैं इसे. Basically, it's a kicker light. Kicker means it's related to the kick, something that is kick the character. तो kick कहाँ से होगा? किसी चीज को kick पीछे से ही करते हो ना. तो कोई light जो kick कर रही हो, it means there will be the more intensity of that light, जो outline सा बनाता है यहाँ पर. और the things is that when there will be the kicker light, एक इमेज, इस इमेज में जो प्रॉब्लम हो ये है, if it will be video ये चलेगा. Once it will be the kicker light, most of the time what we try to cut it on is that the kicker should not fall on the nose. काफी odd सा लगता है अगर nose पे fall होता है तो, right? So try to avoid that kicker light कि वो nose पे fall ना हो, but वो एक depth create करता है to make the outline, right? तो तीनों इमेज में आप differences देख सकते हो. See the difference over here? बैकग्राउंड से सीधा सेपरेशन है बैकलाइट और बैकग्राउंड से. Character have more depth or not? Does that character have more depth or not? The second one, है ना? Yes, sir. Alright, guys. जब मैं तभी बात कर रहा था वो लाइट की वन साइड से लाइट है, I was talking about the Rembrandt light. Rembrandt is the art form, पेंटिंग्स में भी यूज होता है. To create a triangle, the nose का shape जो है इसके नीचे, to create a triangle shape is called Rembrandt lighting, right? Because due to contrast, a shape create होता है. Also एक face को flat होने से बचाता है Rembrandt. पूरा flat नहीं होने देता. Look for the previous image that we have discussed, how flat it looks. लग रहा है ना? Do you know the flat? The third image look flat or not? Yes, sir. See this one? Let's look more interesting. Create a certain shape of face due to that triangle and the shadows, right? अगर मैं इधर बहुत ज्यादा fill कर देता तो क्या होता है? इधर कोई भी बहुत ज्यादा fill कर दे क्या होगा? It will be a flat, right? Flat There will red. be no that kind of contrast at all, right? So that's this kind of lighting called the Rembrandt lighting. There's a many kind of tools that we use for the lighting. Somehow it's called जब lens axis से light होती है, we can say that, you can say that it's butterfly lighting. कि nose के shadows जो नीचे fall होते हैं, you can say it is the butterfly lighting. So अलग-अलग नाम है, but the thing is that lighting का purpose ही ये है कि to create a sense of depth, right? Okay. लाइटिंग रेशियो मैं बड़ा नॉर्मल सा उसने भी बताया था, थोड़ा सा आपको कर देता हूँ. रेशियो क्यों निकालते हैं? डिफरेंट इंटेंसिटी बिटवीन की एंड फिल लाइट. तो कितना कम है कितना ज्यादा है ये कैसे निकालते हैं, राइट? उसके निकालने का सिंपल तरीका है कि क्या, जैसे कि 2:1 मैंने कहा फॉर एन एग्जांपल, सपोज फॉर एन एग्जांपल 2:1, इट मींस
की इज डबल द फिल, राइट। सो 2:1 का मतलब हुआ कि मैंने इंटेंसिटी में आपको क्या बताया था, अदर टर्म्स ऑफ स्टॉप में, अपर्चर के स्टॉप में क्या बताया था, एक्सपोजर कुड बी हाफ और व्हाट, इफ यू गाइस रिमेंबर, हाफ और व्हाट गाइस, इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ स्टॉप में क्या होगा, हाफ और डबल, राइट। आइदर अगर लाइट आप काट रहे हो तो आप इंटेंसिटी आधी करोगे या डबल होगा, यही था ना। In terms of exposure, once we are shifting from like aperture 2.4 to aperture 4, क्या हुआ, कितना डिफरेंस हुआ 2.8 to 4 में, how much stop difference is there, 2.4 and 4, how much guys, जल्दी जल्दी, one stop, फर्स्ट ऑफ so चलो मैं ये रेशियो जो आपको फिर नेक्स्ट में बताऊंगा, कोई बात नहीं है, रेशियो। सो बेसिकली रेशियो के लिए मैं ये बता दूं, अगर ये याद नहीं है, मैंने बताया था, एक तो पहले अपर्चर याद कर लीजिए कि एफ नंबर्स मैंने कहा था, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जस्ट रिमेंबर टू नंबर्स 1 1.4 एंड नाउ मेक इट डबल, यू गॉट योर अपर्चर 1 1.4, 1 का डबल क्या हुआ 2, 1.4 का डबल 2.8, 2 था, 2 का डबल क्या हुआ 4, अब ऐसे करते जाओ 1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22, right, हाँ, एक वन सेकंड, ओके, तो मैंने क्या बताया था, अपर्चर आप जैसे 1 स्टार अपर्चर रहने से नंबर बढ़ाते हो तो क्या होता है, इफ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर यू आर जस्ट क्लोजिंग द लाइट, राइट, इफ यू ओपन इट अप यू आर जस्ट डबलिंग द लाइट, राइट। जब इंटेंसिटी बढ़ेगी आइदर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, it will be double through the help of aperture or ISO or shutter speed, it will be double or half, एक बार ये पीपीटी देख लीजिए आप, हम्म, just read it once. Sorry. यहाँ जो मैं आपको स्टॉप दिखा रहा हूँ, 1 स्टॉप मीन्स व्हाट, अदर लाइफ विल बी हाफ और डबल, राइट, यही हुआ होगा ना,
Light will be half or double, right? Right. तो जब मैं वन स्टॉप की बात कर रहा हूँ तो यहाँ या तो आप डबल देखें या हाफ देखें, अदर इन टर्म्स ऑफ रिलेशन अगर करते हैं. इट मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ की लाइट, इट मीन्स की इज डबल द फिल, राइट? और अगर फिल के तरीके से बात करेंगे, इट मीन्स की इज सॉरी फिल इज हाफ ऑफ की लाइट, राइट? यही होगा ना. 2:1 मीन्स क्या? वन आधा है, राइट? 2:1 मीन्स व्हाट? कि जो आपका एक लाइट है, राइट? सपोज फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. इफ यू नो 2:1 मीन्स व्हाट? आपकी एक लाइट डबल है, एक लाइट आधी है, राइट? सो इट मीन्स योर की इज 1000 watt एंड द फिल इज हाउ मच? 5,500. 500, राइट? नाउ फॉर द टू स्टॉप अब क्या होगा? 250. 2 मीन्स 250, राइट? Right. तो जब ये 250 हुआ तो की कितना था आपका की लाइट? 1,000. 1000. What will be the ratio? 1 ratio 4. 4:1, na? 250 multiply 4, right? So it's the Right. 4:1. For the 3 stop, no, 250 का आधा, right? 125. 17. Yes. 125. 8 stop, right? 8 So stop. क्या, sorry, 8. तो क्या हो जाएगा? 8 गुना ज्यादा. Your key light is 8 times higher than your fill light. So that's the ratio. In terms of stop बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे. Lighting में बात करेंगे तो either it will be half or double. Okay. Right, guys? Confusion Right. है कोई? No. So any confusion, you guys can ask me. You have 2 minutes to yeah, it's a 9 1. पूछ लीजिए कोई भी confusion है तो. और नहीं है तो Basically- I'm just giving you one. Yeah. So basically जितने नंबर ऑफ स्टॉप्स होंगे हम उसको की लाइट की इंटेंसिटी डिवाइड कर देंगे, राइट? और हाँ, बस हमारा फिल डिवाइड लाइट का कर दीजिए जितने स्टॉप होंगे. किसी एक को कांस्टेंट रख लो, किसी एक की वैल्यू कांस्टेंट रख लो, बाकी निकालते जाओ. इधर वो हाफ होगा या डबल होगा. अगर की बढ़ाना है तो फिल को वो रखो, की बढ़ाते जाओ. कि 2 Okay. गुना होगा, 2 गुना से 4 गुना, 4 से 8 गुना, 8 से 16 गुना. ऐसे ही होगा ना. राइट. अगर फिल Right. है तो आधा होते जाएगा. That's Right. सिंपल. तो गाइस वन मोर थिंग, कल के लिए कम से कम कल शाम में क्लास है. यू गाइस हैव टाइम डे एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जस्ट सेंड मी 2 इमेज एटलीस्ट, राइट? तो तुम्हें क्वालिटी क्या लगा, सॉफ्ट और हार्ड? एटलीस्ट 2 इमेजेस, जस्ट सेंड इट टू मी, राइट? मुझे ये सर लगे आपका कि जो ईमेल आईडी पता शेयर है कर दीजिए. या ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए. ईमेल आईडी 1 सेकंड. और दैट Got it. ठीक है. तो कल के लिए ज्यादा मैंने नहीं दिया क्योंकि पिछला आप लोगों ने नहीं किया है, तो चलिए कोई बात नहीं. इफ यू गाइस हैव टाइम पिछला भी कर सकते हैं, सो वी कैन डिस्कस इट टुमारो. आई 2 इमेजेस, इट्स फॉर यू गाइस. करोगे तो यू गॉट टू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज़ पीपीटीज एंड दैट्स लिटरली डिफरेंट थिंग्स व्हिच यू कैन डिस्कस. सो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो. Sir, Good night, take care. I have 2 questions from last year questions Yeah, paper से. या क्या था? सर लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप आई मीन इनके अगर हमें आंसर शीट मिल जाए तो कीज. आंसर शीट देखो क्या हो, सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, बट द थिंग्स इज दैट आई विल जस्ट MCQ मेक वाले. दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड आई विल गिव यू द सम क्वेश्चंस आंसर्स एंड वी विल डिस्कस ऑन इट. ओके. आई विल गिव यू द हम कब करेंगे? सिचुएशंस ऑन या जो MCQ के क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर के. एमसीक्यू. हाँ अच्छा, MCQ उसका जो सॉल्व हमारे. पेपर चाहिए आपको? हाँ. लेट मी चेक इट आउट. इफ आई हैव आई विल सेंड इट टू यू. लेट मी चेक इट आउट. ऑलराइट सर. कल तो नहीं होगा बिकॉज ऑफ सम वर्क, बट मैं देखता हूँ कहीं पर है वो सॉल्व है आंसर, तो मैं आपको भेज दूंगा. बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, I'll just make that kind of questions, not the same questions, that kind of scenario, that kind of situation, the different kind of scenario that we take, and I'll discuss on that, right? So Sure, subjective sure. ठीक है.
Okay, I guys. guess. Thank you very much. See you Thank you. tomorrow.